Um, Phonological analysis, the analysis of the way sounds are, words with certain sounds, and the emphasis, the focus is going to be on the sounds of words. Okay, the words have been selected on the basis of their sounds, and there has been certain literary devices based on the arrangement of the sounds of words within words themselves, within phrases, and within sentences, exactly within poetic lines. So phonological analysis का मतलब है कि we study the sounds of words and the arrangement of sounds in poetic lines, particularly in poetry. That is going to be the first level, and you can choose to apply this to any poetic text that you want to. But there are various parts to it, which the concepts of which we need to clarify in order to go about it. So phonology may, when poets make certain lexical choice, when they may select certain words to use, to utilize in their poetry, in their particularly, I'm not saying they do not use these devices in prose, but particularly when they use it in poetry, they choose those words on, not on the semantic foundation, on the semantic basis. That also plays a role, but the greater part, the greater role is played by the sounds of words. And for those sounds and similar sounds and different sounds and sound arrangements, we analyze the poetic texts. So what are these? Phonological devices have a role to play in contributing to stylistic effects. They create a certain style, a certain writing style. They give a certain rhythm to a piece of text, to a poetic line in particular. And these are very important because sounds create rhythm, sounds create music. The repetition of sounds and the dissonance of sounds, the dissimilarity of sounds, these are used for various purposes, and they kind of enhance the objectives, the themes, the purposes for which they are used by and for which they are chosen by poets. Proper use of speech sounds is pleasant to the ear. ठीक है, जिस तरह से sounds poetry में, songs में, lyrical poetry is based on sounds. So they are aesthetically pleasing, but along with that, we are going to see how they are related to, how do they help in the communication, in the expression of ideas. If there is an idea, if there is an idea or thought, there is a feeling, there is an intense emotion, there is a certain scene which is depicted, there is a certain image which is brought to the reader's mind. उन सब के लिए किस तरह की sounds help करेंगी, and what kinds of sounds are used by the writer? Are they in harmony with the kind of image he wants to build? Are they in discord with, they are totally disconnected from the kind of idea they want to represent? So that will have to be analyzed. Poor sound effect will certainly lead to negative stylistic effects. अगर कोई बहुत ही अच्छा rhythmical, a very beautiful scene is portrayed and a lot of harsh sounding words are used and these are repeated, what could be the stylistic impact? And that will be a negative one, because you want to portray a scene which is aesthetically pleasing, which is beautiful, which is full of beautiful objects and happenings, and you are using very harsh sounding words and you're repeating on them. So that will lead to a very negative stylistic effect. Phonological devices that bring about stylistic effects include sound patternings, the patterns of sounds, the arrangement, the organization of sounds. And on the basis of these arrangement of sounds within poetry, we can say that there are six major, there are so many techniques and devices, but the six major ones are, which you are going to look for, to have an eye for when you're reading a poetic work in particular. Number one is alliteration, number two is assonance, number three is consonance, number four is onomatopoeia, number five is rhyming pattern or rhyme scheme, which is also called the external rhythm to a poem, and rhythmic patterns, the internal rhythm within a poetic line, which is also called the internal rhythmic pattern. One is on the outside, on the borders of it, that is called the rhyme scheme, particularly at the ending of it. And the other one is in the middle of it, in the whole of the poetic line. And that is called, that is related to feet and that is related to meter.
how internal rhythm and music and rise and fall are built. शायर के पास तो कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई गिटार नहीं होता कि वो कभी आवाज़ को तेज़ करे कभी नीचे करे, तो उसके पास जो है साउंड्स हैं एंड साउंड्स थ्रू वर्ड्स, ठीक है। अब ये सारे ये 6 जो मेजर डिवाइसेस हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इंस्टेंसेस ऑफ ओवर रेगुलरिटी. Whenever in this chapter the term over regularity is used, you are going to take it in the sense of repetition and uniformity. Certain words are repeated, certain meter is repeated, certain foot is repeated, certain consonant sound or vowel sound is repeated, and these are going to make up these literary devices. So in poems, phonological devices not only add to the musical quality. These sounds create music within poetry when you read them on a piece of paper and when you listen to them, when they are recited or when they are spoken. लेकिन सिर्फ यही पर्पस नहीं है कि they should make it very musical and aesthetically pleasing. They also serve a very intrinsic, inherent, basic kind of a function that they organize texts and they give kind of a coherence to ideas within a poem. They are related to the theme. There are so many things they are related to. These sound patterns are related to within a text, and these we are going to discuss in these kinds. Number 1 is alliteration. Alliteration is the repetition. ज़्यादातर, that is how it is different from consonants. Consonants का भी मतलब है repetition of consonant sounds. ठीक है, लेकिन alliteration is the repetition of the initial consonant sound. जो पहला अल्फाबेट है ना, या जो पहली साउंड है, that should be repeated in the initial consonants of the stressed syllables in words in which the vowel sound is stressed. उसमें जो initial stressed हो unstressed हो वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन initial जो consonant sound है, the sound at the beginning of words, and if that is a consonant sound and if that is repeated, it is called alliteration. So it is the repetition of the initial consonant sound. अब अगर हम इसकी example, we keep the example in this one example, and this is like, I'm all for this, the rhyme of the ancient mariner. It's a beautiful, it's a very good poem. I mean, you are going to, there is a story narrated in it and you are going to like it. इसमें जो albatross का symbol है, which the mariner hangs around his neck, that image is very beautiful. So you are going to enjoy the story of it. ये बहुत ज़्यादा narrative technique में भी, this poem is cited very often because it is very, not only in all the devices, narrative technique maybe it is slightly different from other poems, and you should read it because this is cited so very often in these devices. अगर आप इन lines पे focus करें, the fair breeze blew. Okay, let me listen to it very attentively. Then I'm going to pose a few questions to you. ठीक है, and I'm going to ask you to contrast it with another poetic line. तो आप बहुत ही गौर से सुनें ताकि आपको सारा idea clear हो. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. My first question to you is that, what kind of an image does Coleridge want to portray? My second question to you is that, you are seeing certain consonants coming, placed in the beginning of words, in the beginning of stressed syllables. Are these sounds soft or harsh? And then you can tell me whether there is harmony or whether there is concord, there is agreement, there is harmony, or there is disharmony or there is discord between the sounds and the image which is portrayed by these lines. 3 सवाल हैं. पहले तो मुझे ये बताएं कि फ sound, b sound, s sound, are these soft sounds, mild sounds? Or are these very heavy sounding, harsh sounding, severe sounding, rough sounding words, sounds, consonant sounds?
Say Ma'am, yes they're or no. very soft. They are soft. Fur They are and soft. blur and soft. ठीक है, पहला सवाल हमारा हल हो गया कि ये that is resolved. One issue is resolved. The second one is that what kind of an image? You can look at you if you imagine it, I think you will get the scene. See it with Ma'am, the it eyes. represents a picture of nature, and that is why he uses very नो, soft sound. नेचर तो है, देखिए नेचर में तो सैलाब भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, जलजला भी आ सकता है. इट कुड बी एनी शॉकिंग, एनी स्टॉर्मी, एनी इंटेंस, एनी सिवियर, रफ काइंड ऑफ हैपनिंग इन नेचर. लेकिन वो कह रहा है कि द फेयर ब्रीज, व्हेन यू लिसन टू द वर्ड ब्रीज, सॉफ्ट, माइल्ड, gentle wind is blowing. And when you imagine white foam on the surface of the sea, how harsh can it fly? It will be moving, it will be flying gently. And the furrow of the ship that is falling, going smoothly, freely. And then we were. The word burst is slightly, I would say, a bit intense, but and sound it is like emphatic. But if you look at the rest, into that silent sea, samandar jo hai, ऊपर सुकून है, it is calm, it is serene, everything is going smoothly and gently. So it's a very calm, very serene kind of an image, like everything is peaceful, and we are making our journey, and we got into that silent sea. So everything before the mariner killed the albatross, before he kind of fought with nature, before he committed a crime against nature, everything was in harmony. Man's life, man's journey was in harmony, was in peace with the natural surrounding. That was my, okay, it's a very serene, a very calm, a very quiet, a very peaceful kind of an image. Third सवाल मेरा क्या था? What was that? So, is there harmony between the kind of image and the kind of consonant sounds that he is repeating? Okay. इस सवाल को हल करने के लिए I'm giving you a line. Write it down with you if you have your notebook or anything with you. Shakespeare एक I don't know whether I think it's in a play. एक line वो use करता है. The tumultuous tempest raged. Tumultuous, turmoil, turbulence. Irfan, what's wrong with you? Maybe internet connection. Tumultuous tempest raged. Look at the word rage. Something is noisy, in anger, shocking, blowing things away. Tumultuous, full of turmoil, chaos, turbulence. Tempest is a word for strong wind, for storm. So वहाँ पे शेक्सपियर पोर्ट्रे करना चाहता है the th sound is consonant sound is repeated. There is alliteration as well. यहाँ पे भी alliteration. वहाँ पे वो कहता है कि एक जोरदार किस्म का तूफान जो है, it is raging, it is growing bigger and bigger and more severe with the passage of time. और यहाँ पे जो consonant sounds हैं वो बड़े soft हैं. तो अब मुझे ये बताएं कि is there harmony between the consonant sounds which are repeated, alliteration? Is it in harmony with the image? In the example of Shakespeare में भी होगा. शेक्सपियर में भी है, उसके साथ है. अगर वो जैसे सपोज कोलरिज ये कहता है the fair breeze blew, the white foam flew, the tumultuous tempest raged, we were the first to go into that silent sea. तो यहाँ पे फिट होता वो जुमला या वो फ्रेज यहाँ पे फिट होता. मैम उसमें शेक्सपियर जो यूज कर रहा है टा साउंड को, he is using it in the first of all the words, तो उस पे stress आ रहा है, that's why it's very harsh. Here he has used first and burst. There's not much stress, so it's a soft and calming sound. Soft sound है because the image is a calm one. तो the idea is this कि ऐसे नहीं होता कि शायर जो है ना वो बस जो उनकी मर्जी जिस साउंड को वो रिपीट करना चाहें, वो जो साउंड को देखना पड़ता है, साउंड को जज करना पड़ता है कि ये माइल्ड साउंड रिपीट हो रही है, डज इट कन्वे काइंड ऑफ अ म्यूजिक व्हिच इज सॉफ्ट. ठीक है, आप सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ सॉफ्ट रिदम, फॉर अ सॉफ्ट साउंड. लेकिन अगर तूफान है, फ्लड है और लाइक रेजिंग काइंड ऑफ अ सीन है
then you can go for heavy sounds, you can go for very kind of intense consonant or harsh sounding or rough sounding consonant sound. So the point is this, what I want to convey is this, कि जब आप पोइम में इसको एनालाइज करेंगे ना कि दिस इज एलिट्रेशन, ओके, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू से कि yeah, because this consonant sound is repeated, there is alliteration in this point. Alliteration for what kind of image, for what kind of character, for what kind of an idea? Is it in harmony with that? Is it in disharmony with that? So what is, does it create a musical sound or no? It doesn't go with the music of the whole of the stanza. अगर कहीं पे discord है तो why is it so? If there is concord, there is harmony. तो why is it so? Does it go with the idea and all? तो ये सारी चीज़ें, like you have to take the text, the poem as a whole, and then you have to see the work, the function of alliteration within that. Concord with the idea, concord with the image, with the rest of the words. ऐसा नहीं हो सकता कि you have used in the first line very soft words and all. हाँ, अगर आप build करना चाहते हैं कि इस stanza में ऐसे भी हो सकता था कि the fair breeze blew and the white foam flew. And then slowly and gradually, like the weather started changing, and in the ending line, you want to build the image of a storm. So फिर आप, you can gradually build from soft to medium level kind of sounds, and then you go to the rough and to the harsher sounds. तो आपने पूरे के साथ जो है वो रिलेट करना आपको पड़ता है. ऐसे नहीं होता कि just alliteration because that is a device and the poets have to use it. No, it is interwoven with the context. It is interwoven with the rest of their the sounds used in the poetry. It is interwoven with the theme, with the image, with everything, with lexical choice as well. Lexical choice के साथ भी अगर आपने इस तरह के words use किए हैं they are kind of monosyllabic हैं, short words हैं, and then you are start using very very long words, तो no, the image will be disrupted. That is more on lexical choice, लेकिन यहाँ पे भी फर्क पड़ता है. Okay, second way, I think you are, alliteration is the repetition of the initial consonant sounds in stressed syllables or in words. You can simply say words. Then we come to assonance. Assonance is slightly different. Consonance is more similar to alliteration. Assonance में ये फर्क है कि इसमें vowel sounds repeat किए जाते हैं. Assonance is the repetition of identical. Not only vowel sounds, but the same vowels are. The same vowel sounds are. Not vowels, the same vowel sounds are repeated. In stressed syllables, they follow one another. अगर आप देखें, I arise from dreams of thee. In the first sweet sleep of night. अब ये long vowel sound है, dreams of thee. Identical, double E sound, vowel sound जो है, and double E. And then double E again, and double E again. A long vowel sound है. अब इसका सिर्फ देखें, ये नहीं है कि maybe the writer chooses to repeat a vowel sound which is short, maybe the I sound or maybe the U sound, ठीक है, और वो short sound होगी, and that sound, vowel sound, is going to be repeated. लेकिन उसका impression, the impression is going to be different from this long vowel sound. Dreams, thee, sweet, and sleep. जब कहीं पे writer जो है poet uses long vowel sounds, तो इसका मतलब है कि he is kind of dwelling on the words, he is dwelling on the image. He is there is a sense of stretch, there is a sense of leisure, and he wants the reader to dwell on the lines, on the image, on the sound. So it takes you a bit of time when you read long vowel sounds. You kind of stay for longer on those lines, and when similar identical vowels with short sounds are repeated, then they kind of go in a brief manner, they go in a very swift manner, and the poet doesn't want you to dwell on them, to spend longer thought process on them. He doesn't want you to think longer on them, to spend longer time on them. So इसका बड़ा एक leisurely kind of an image होता है. Dreams of thee. There is a sense of extension, there is a sense of stretch, as if he is spending time on it and he wants you to stay
longer with the image, with the idea, and with the very sounds of the words. So assonance is the repetition of identical vowels and stressed syllables. आपने इसको relate करना है कि कहीं पे short sounds are repeated, identical, similar हैं sounds, repeated हैं, और कहाँ पे long हैं, कहाँ पे short हैं, कहाँ पे contrast हैं, कहाँ पे comparison है, how many times are these used, and for what purposes, for what ideas, for what shifts and ideas, for what abrupt change. ऐसा भी तो हो सकता है, this could happen in this way, he is using these long vowel sounds in four. For example, it's a sonnet. In the first 10 lines, he is using long vowel sounds. When he comes to the poet comes to the poet or the poetess comes to the last 4 lines, so he is using very short vowel sounds. So they are identical and they are repeated upon, and there is assonance, but the abruptness or the kind of a swiftness is brought to the last 4 lines. So everything has to be related to the whole. And then we come to consonants. Consonants का मैं आपको briefly बता दूं कि जैसा कि नाम से जाहिर है, as is evident from the very title, the very name, कि repetition of consonant sounds है. And the way in which it is different from alliteration, which is the repetition of the consonant sounds. Sound है वो initial sound है, consonants बीच में भी हो सकता है और ज़्यादातर end में होता है. But it could come, this consonant sound could come in the middle of a word, or particularly it comes in at the ending of a word. And when one consonant sound is repeated, that is, whether it comes in the middle of the word or at the end of a word, when there is a lot of repetition on that, that is called consonants. अगर आप पहली लाइन में देख लें और दूसरी लाइन में देख लें, so there are, in the first line, nothing lovelier than that lonely call. L sound is repeated on, is repeated upon. And then when you look at the second line, bare and singular like a girl. So g sound is repeated on, consonant sound, and L sound again, L sound is repeated on. So ये भी इस तरह से एक kind of a repetition of sounds which gives a certain rhythm. And then when we go to another sound, it has a sense of either rise or fall, but there is a variety. There is a variety of tune, there is a variety of sound, and these variations in sounds and these repetitions in sounds, they are poetic devices and they are aesthetically pleasing. With the help of them, we can recall those lines, we can feel aesthetic pleasure in them, and we appreciate the poet's eye for, the poet's ear for words. ठीक है, तो ये तीनों, alliteration, consonants, and assonance, these are important. Now we go to the onomatopoeia. Onomatopoeia, you must be aware of if you have done poetry. What are these? Natural sound. जी? Natural sound. किसके साथ matching sound? Matching natural sound. Sorry. Natural sound. Certain words are coined, they become part of a language, they become part of a dictionary, the dictionary of a language. When, let us take the example of this ticking sound of a clock. So, bilkul, there's been drop silence in the house, and there is this tick, tick, tick sound of the clock. Then the word tick could be coined out of it. आपने natural sounds सुनी, or there are people who are very sensitive to sounds, तो उन्होंने ticking sound बना ली. अब for example, the buzzing of bees, buzzing sound, ठीक है, तो वो जो zzz sound है, that is captured and the word buzz is used. And then there is beep for a horn. जो भी गाड़ियाँ चलती हैं वो उनकी beeping sound आती हैं, तो the word beep is derived. जैसे होता है splash word, things are spread around. और जो water का splashing sound है, that is like a sh sound, splashing sound. So the word splash is derived. So onomatopoeia is like this. बहुत सारे words हैं, और भी बहुत सारे words हैं कि जैसे the gushing sound of water, gurgling sound and gushing. Sh sound is produced in. Initially, it is gurgling. So gush word is derived out of it. जैसे हम लेस का पैकेट
खोलते हैं and there is a crunch ch sound. So crunch word could be derived from that. ये सारे words जो है ना, ये जो natural या chattering of teeth है, ठीक है, when our teeth they kind of collide with one another and there's a chattering sound which is produced. ये सारे words हैं जो हमने natural sounds से coin किए हैं, and these are when these are repeated, when these are used a lot in poetic work, this makes we have to be sensitive to them. जब हम इनको पढ़ते हैं, खास तौर पे अगर even if like a few words are used or the words are repeated, तो a kind of a sound, a natural sounds are brought to our ears, and जब एक sound आती है तो all of a sudden another part of our nervous system is kind of stimulated and we start seeing the image of that sound, the image of that object which is creating the sound. So we start imagining along with the poet. हम सुनना भी शुरू कर देते हैं, हम टेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं, हम टेस्ट वर्ड्स भी होते हैं. तो this is how poets work with words. They create with words and this is how they bring images, they bring sounds to us. So onomatopoeic words, they are important and we should be sensitive to them when we are analyzing a poem phonologically, from a stylistic, from a linguistic perspective, the literary language, various literary devices and techniques used by poets in particular here. Then we come to the rhyme, and rhyme here means rhyme scheme. ये सबसे पहला काम है जो हमसे कराया जाता है when we become students of English literature. अगर आपको याद हो, जो पहले लिटरेचर की क्लास में हम गए या आप गए तो हमें ये कहा जाता है कि ये एक पोएम है और इस तरह से इसकी राइम स्कीम जो है वो आपने एक लाइन में लिखनी है कि दिस इज द राइम स्कीम ऑफ अ पोएम, एंड दैट राइम स्कीम इज बेस्ड ऑन द एंडिंग साउंड्स ऑफ वर्ड्स. जैसे अगर आप देख लें, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, केयर एंड स्टेयर, बाउज एंड काउज, पास एंड ग्रास, डे लाइट एंड नाइट. So हम आखिरी words हैं उनकी sounds को देखते हैं and we see whether, okay, there is a first sound, we label it as A. Now if the second one matches, it ends with the same sound, stare, it ends with the same sound, that is why हम A ही use करेंगे. फिर bows जो है वो care और stare से different है, तो हम उसके लिए B title use करते हैं, B alphabet use करते हैं. But bows and cows are similar, so we use B for the ending sound of this word cows as well. अब ये सारी पूरी एक rhyme scheme बन जाती है. The point is not this. The point is this. और इसमें मैं आपको थोड़ा सा गज़ल की भी, जो उर्दू की गज़ल होती है ना, जब आप rhyme scheme को देखते हैं कि पहली दो lines में words end with the same sound. So A and A. And then B and B and then C and C and D and D. कभी ऐसा भी होता है कि A, B, C, D, E and F, F. ऐसा भी हो सकता है कि A, B, C, D, 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 D and F. ठीक है, there could be varying rhyme schemes. अब आपने देखना है कि कहाँ पे, why is the rhyme changing? Why is the rhyme scheme having variation? Why is the same sound not repeated in the second or third line? इसका मतलब जब दोनों, जैसे गज़ल में होता है ना, गज़ल में जो शेर होता है तो उसके जो पहली लाइन होती है, दूसरी, डिफरेंट आइडियाज़ कैन बी. ये कहा जाता है कि गज़ल इज डिस्टिंक्ट ऑन द बेसिस, एक नज़्म में पूरा एक ही आइडिया प्रेजेंट किया गया होता है. गज़ल में हर शेर में एक मुख्तलिफ आइडिया होता है. वन कुड बी अबाउट पॉलिटिक्स, द अदर वन कुड बी अबाउट लव, द अदर वन कुड बी अबाउट द पोएट्स हेल्थ. सो वन नेवर नोज. लेकिन जो पहला शेर, जो अशार होते हैं, उनका रदीफ और काफिया आपस में जो दो लाइन्स हैं उनका मिलता जुलता है. Now in English poetry, when there are like these first two lines, if they have the same rhyme scheme, so most probably this is the situation कि one idea is presented in them, and then he goes to a different image and a different idea, slightly different idea, and then he coins a different rhyme scheme for it. And if when there is a stanza in which all the lines are having a different ending sound, a different rhyme, और आखिर में दो जो लाइंस हैं, जो कपलेट हैं, दे आर राइमिंग विद वन अनदर, तो मे बी
diverse ideas are presented in those lines, and at the end they are concluded. And the ending two lines, the penultimate line and the last line, they are presenting, they are based on the same idea. तो जहाँ पे repetition of the same sound हो, ये नहीं है कि उसको आसान लगा, उसको ये word मिल गया और फौरन ही उसने डाल दिया, ऐसा नहीं है. These are very much intrinsically related to the ideas कि जहाँ पे rhyme scheme एक होगा तो most probably one idea will be presented. ये भी इन्होंने कहा है कि there are one syllable rhymes and two syllable rhymes. Sometimes there are monosyllabic words के जिसमें एक ही syllable होता है. जैसे for example yes or no. There could be two syllabic words जैसे इन्होंने कहा है कि जिसमें दो syllables होंगे. उनको feminine कहा जाता है, I don't know why. और जो बिल्कुल simple and straight हैं ये monosyllabic words हैं. For example yes and no. They are very simple, they are very straight, they are very short, so they are called masculine. I think it is said by a man, not by a female writer. लेकिन syllabic words होते हैं वो comparatively, polysyllabic words का मतलब है कि there are so many syllables, multiple syllables used, so they are comparatively longer words, they are comparatively bookish words, they are comparatively scholarly words, they are comparatively formal words, and these words are comparatively, when they are complex, they have a lot of combinations. जबकि जो monosyllabic words होते हैं जैसे yes or no, जैसे आपसे किसी ने पूछा और आपने yes में जवाब दिया, it means you want to cut the conversation short. You're not explaining it, and you say no, and that there is a full stop. इसका मतलब ये है कि monosyllabic words convey an idea in a brief manner, in a terse manner, in an abrupt manner. तो इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि राइटर जो है वो polysyllabic words use, rhymes use करता है या monosyllabic rhymes use करता है. Now we'll come to this part कि यहाँ पे इन्होंने बात की है कि rhyme is pleasant. ठीक है, एक ही तरह, एक तो हम देखिए नर्सरी राइम्स होते हैं, बच्चों को याद रह जाती है. अभी हमें if we have no time to stand and stare, तो if I want to recall through the rhyme scheme, मुझे होगा कि पहली लाइन की भी का रिदम भी ऐसा ही था, तो I'll keep on thinking on it and I can recall it easily. लेकिन ये सिर्फ नहीं है for the purpose of memorization, for the purpose of aesthetic pleasure. There are subtler meanings to the utilization of rhyme schemes. और ऐसा नहीं है कि जिन वर्ड्स के केयर एंड स्टेयर या ऐसे वर्ड्स हैं तो दे आर, इफ यू गो डीपर इनटू देम, एंड पोएट्स डू गो डीपर ऑन सटलर लेवल्स टू देम, तो वो उनके अंदर कोई एक लॉजिकल, एक डीपर कनेक्शन भी उनके सिमेंटिकली देयर इज, दे आर बाउंड टुगेदर, they share an affinity with one another, they are bound in meaning as well. तो फॉर इन्होंने कहा है कि यहाँ भी आप देख लें, ये एक पढ़ लेते हैं जल्दी से. राइम एक्चुअली सर्व्स एज अ कोहेसिव डिवाइस फॉर पोएम. जैसे मैंने कहा ना कि एक ही राइम है, राइम स्कीम है, जैसे एफ एफ है, तो मे बी वन आइडिया इज प्रेजेंटेड एंड दैट विल कोहेयर. दोस टू लाइन्स विल नॉट कोहेयर टुगेदर phonologically in the rhyme scheme, but also pertaining to the idea. Binding lines which are closely associated in content as well. अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देख लें, I have known the evenings, mornings, afternoons. The next line is, I have measured out my life with coffee spoons. ठीक है, आप अपने दिन गिनना चाहते हैं, जैसे let me give you another एग्जाम्पल. वो ज़्यादा आप सुनते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इतनी बहारें देखी हुई, आई हैव सीन दीज मैनी समर्स, और आई हैव सीन दीज मैनी ऑटम्स और स्प्रिंग्स. ऐसा कभी सुना है आपने? वो ये नहीं कहते कि मैं 20 साल का हो गया हूँ या मैं 50 साल का हो गया हूँ. वो कहते हैं आई हैव सीन 50 समर्स एंड आई हैव सीन 20 स्प्रिंग्स. आई हैव सीन 20 afternoons in Islamabad, you can say. It means that for the last 20 days you have been in Islamabad. 20 सपहर देखने का मतलब ये है कि आपने 20 दिन गुजारे हैं, क्योंकि दिन में एक ही आफ्टरनून होता है. अब अगर आप ये देख लें कि कॉफ़ी स्पून है, एवरी डे, एवरी आफ्टरनून यू टेक स्पून ऑफ कॉफ़ी, यू ड्रिंक कॉफ़ी विच हैज़ वन spoon of coffee in it, coffee beans in it or coffee in it. So you can say कि in I have taken
20 coffee spoons in Islamabad. If you're used to taking it 1 spoon of coffee every day, suppose you are. तो ये भी एक तरीका है. देखिए, you measure your life with summers. You have seen 50 summers. I'm 50 years old. आप ये कह लें डायरेक्टली, या आप कह लें कि I have seen 50 summers. अब आप सपोज आपने साल में कॉफ़ी की एक बॉटल या आप पीते हैं सपोज, तो I have drunk or I have taken 50 bottles of or 60 bottles of coffee. It means you are 60 years old. So the way you measure things with coffee spoons, with afternoons, with years, with coffee bottles, isme intrinsically there is a connection meaning, and I hope you get it. Do you? Yes, ma'am. या नहीं? Yes, ma'am. अब हम आते हैं ज़रा मुश्किलात की तरफ. मुश्किलात नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा, आपको फुट और मीटर का आइडिया हो, ज़रा मुझे बताएं कि आपको है. डू यू हैव एन आइडिया? किसका मैम? ये जो बलाएं इधर बैठी हुई हैं, मीटर और फुट. मीटर का थोड़ा आइडिया था, लेकिन फुट का नहीं समझ. फुट का नहीं है? अच्छा, ठीक है. चलें, ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, ज़्यादा इससे परेशान ना हो कि आपको समझ नहीं आ रही है इस तरह से. इसको ब्रीफली अगर आप फुट जो है ना, बिफोर कमिंग टू दैट मैं आपको बताऊं कि फुट जो है वो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. ठीक है, फुट के अंदर, फुट जो एक पोएटिक लाइन के अंदर या वर्ड्स के अंदर जब फीट को मेजर किया जाता है ना, तो 1 यूनिट अगर उसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल भी है, ठीक है, एम्फेटिक सिलेबल भी है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल भी है, तो उन 2 सिलेबल्स को मिला के जो यूनिट बनता है, साउंड यूनिट बनता है. साउंड ऑफ अ स्ट्रेस्ड वावल एंड द साउंड ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड वावल और सिलेबल, उसको फुट कहा जाता है. वो एक छोटा सा मेजरमेंट है, दैट इज अ स्मॉल मेजरमेंट. फिर मीटर जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो जो पोएटिक लाइन है उसका मीटर क्या होगा. इट डिपेंड्स ऑन, दैट इज अ ब्रॉडर लार्जर मेजरमेंट या काइंड ऑफ अ फोनोलॉजिकल डिवाइस, और वो इस पे डिपेंड करता है कि कितने फीट यूज हुए हैं. उसका मीटर ये होगा if 4 feet are used, are repeated. Sometimes they are different, but mostly poets try to arrange, like they choose 1 foot और उसी को ही वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं. That is more rhythmical. अब उसके अंदर 4 फुट यूज हुए हों, 4 फीट यूज हुए हों या 5 हुए हों, हेक्सामीटर, पेंटामीटर या टेट्रामीटर, वो उस बुनियाद पे होता है कि वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, यूनिट है ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. लेकिन इसमें भी वैरायटी है, सिर्फ 1-2 साउंड्स नहीं होती. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फीट जिसमें ज़्यादा साउंड्स भी आर इंक्लूडेड. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दोज फीट, मीटर ऑफ अ पोएटिक लाइन इज मेजर्ड. यहाँ पे आप यहाँ से हम देख लेते हैं. The foot is the unit, the smallest unit of stressed and unstressed syllables. ठीक है, कि जिसमें कम से कम ये 2 चीज़ें हों, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल हो, एम्फेटिक सिलेबल हो, एक अनस्ट्रेस्ड हो. और यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं उसमें स्ट्रेस्ड के लिए स्लैश का मार्क यूज हुआ है और जहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है उसके ऊपर वी लिखा हुआ है. The repetition of feet produces a regular pattern throughout the poem called metrical pattern. पहले तो हम मीटर को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि फुट में क्या है. I am, अब फुट की 4 किस्में हैं, ठीक है, उसी से आपको पता चलेगा कि फुट के अंदर क्या है. The first one is iambic foot, the second one is trochaic foot, anapestic foot and dactyl. अगर आप इस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस या इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में, बिकॉज द नेटिव स्पीकर्स आर वेरी एक्सपर्ट इन साउंड्स. हम जो फॉरेन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं, हमें बड़ी मुश्किल से हम जानते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेस हैं. एक्सेंट इज डिपेंडेंट ऑन रिकग्नाइजिंग, on being sensitive to the stressed syllables and to the unstressed syllables. तो ये काफ़ी for foreign speakers this is comparatively a technical task.
तो अगर आप बाकी 4 को भी कर लें या 5 को कर लें, उसको ना भी करना चाहें तो देयर इज अ चॉइस विद यू, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया शुड बी देयर विद यू. Iamb or iambic foot alternates stressed and unstressed syllables. इसमें 2 syllables होते हैं, stressed और unstressed, और ये एक ही word के अंदर भी हो सकते हैं. लेकिन वो जो उसकी, जैसे इन्होंने कहा है कि एवरी वर्ड है, कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि जिसके अंदर 2 वावल साउंड्स हैं, एक वर्ड के अंदर भी हो सकते हैं. हमें वर्ड को नहीं कि 2 ही वर्ड्स हों, हमें साउंड को देखना है कि जो सिलेबल है एक स्ट्रेस्ड हो, बेशक वो एक वर्ड के अंदर ही 2 फीट आ जाए, लेकिन हमने साउंड्स को देखना है. अगर वो पहला सिलेबल साउंड अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है तो दैट विल मेक एन आयम्बिक फुट. अगर पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड है तो इट इज गोइंग टू बी ट्रोशे फुट. फुट है, 2 साउंड्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं का यूनिट है, ठीक है. 2 जो पहले साउंड्स हैं, एक वर्ड में 4-5 सिलेबल्स हैं, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स हैं, लेकिन उसमें जो पहला वावल साउंड है वो अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है, तो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी टेकन एज 1 फीट एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड आयम. जो दूसरे में पहला स्ट्रेस्ड है और जो दूसरा है वो अनस्ट्रेस्ड है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड ट्रोशेक और ट्रोशी, ठीक है. फिर हमारे पास एनापेस्ट है और एनापेस्टिक है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है डेक्टाइल और डेक्टाइलिक फुट में, कि हैज 2 unstressed syllables and there is 1 stressed syllable but it will begin with an unstressed one, ठीक है. वो उसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, इसमें 3 साउंड्स होंगी, 3 सिलेबल्स होंगे, लेकिन शुरू ये होगा अनस्ट्रेस्ड से एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एनापेस्टिक फुट. फिर डेक्टाइल में क्या होगा कि इट इज गोइंग टू, इट हैज द सेम 3 साउंड्स बट इट विल बिगिन विद द स्ट्रेस्ड syllable and that is going to be the identity of it. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, ये बहुत with a lot of exercise, with a lot of attention these things come, लेकिन basic ideas हैं. what is an iambic foot, what is a trochaic foot, what is an anapaestic and dactylic or dactyle. अब मीटर कैसे बनता है? मीटर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मोनोमीटर जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 1 फुट, उसका मीटर मोनोमीटर होगा अगर 1 फुट होगा. अगर उसमें 2 फीट यूज़ हुए हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी डायमीटर. अगर 3 फीट यूज़ हुए हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी ट्राईमीटर एंड इफ इट हैज़ 5 फीट देन इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड टेट्रामीटर एंड पेंटामीटर. यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है कि the number of foot in the poem are going to determine the meter of a poem or the metrical pattern of a poem. और फिर वो होगा कि iambic foot जो है वो repeated है 4 times or 5 times, या trochaic है, या dactyle है, या बाकी है. I think these are a bit technical details, but if you want to focus on them, you can read them again and again. ये सिर्फ reading से भी नहीं आएगा. Analysis of poetry, going for the sounds of words, doing practice in stressed syllables and unstressed syllables. This is a lot of hard work and that will be required if you do the stylistic analysis of the meter and the foot, the feet within poem. ठीक है. इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स में फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं जाते. अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं या इस तरह से एनालाइज करना चाहते हैं तो फिर हम कर लेंगे. ग्राफोलॉजिकल और लेक्सिकल एनालिसिस पे आते हैं. ग्राफोलॉजिकल, ग्राफोलॉजी मीन्स, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि वट एवर साइन, वट एवर शेप, वट एवर सिम्बल अपेयर्स ऑन द पेज, दैट इज़ ग्राफोलॉजी, दैट इज़ अ ग्राफ, दैट इज़ अ विजुअल, दैट इज़ एन इमेज. ठीक है. कॉमा लगा दिया, दैट इज़ एन इमेज. कहीं पे बिल्कुल स्मॉल लेटर्स हैं, कहीं पे कैपिटल लेटर्स हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट इमेज, देयर इज़ अ डिफरेंस. शेप ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है. Like in this we are given the example of a poem which is organized, it is based on the theme of loneliness and it is organized in a vertical way. ठीक है. And I recently read a poem by one of the, she used to write on internet. रूपी कौर और रूपी कौर जो पोइट्री है
वो उसके साथ ग्राफिक पिक्चर्स भी लाइक ड्राइंग्स होती हैं, स्केचेस होती हैं. लेकिन देयर आर अ फ्यू पोइम्स के जिसमें her poems are shaped, her feminist poems are given, जी जी they are written in the shape of the body of a woman. Feminist जो उसकी poems हैं, वो एक औरत जिस तरह बैठी हुई होती है. और I'm told that you're not going to use the word औरत. आप बेहतर है कि खातून इस्तेमाल कर लें, woman कर लें. एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताया कि it has negative connotations. I cannot speak about those negative connotations. Lekin you can. This is an Arabic word and it has negative connotations. So she told me, no, you should go for khatun instead of this term. And I was enlightened. Okay. Yeah, this could be. जैसे कुरान में निसा का word use हुआ है. आप खातून की जो डायरेक्ट उर्दू में ट्रांसलेशन है निसा की, वो खातून या ख़वातीन है, तो वो लफ्ज़ जो है वो औरत से बेहतर है, विच हैज़ अ डिफरेंट अरेबिक मीनिंग. तो ये तो जनरली बात चल पड़ी. जैसे मैंने आपको कहा, अच्छा ग्राफोलॉजी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का राइटिंग स्टाइल बड़ा वर्टिकल होता है. दे राइट इन अ वर्टिकल वे. There are people who make their G's and their P's and their alphabets very round. और कुछ लोगों का बड़ा इटैलिसाइज्ड स्टाइल होता है कि एज इफ वो उनके अल्फाज ऐसे, उनकी शेप ऐसे आती हैं एज इफ दे आर अबाउट टू फॉल, द वर्ड्स आर अबाउट टू फॉल asleep, एज इफ दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर और ऑन बेड. तो ग्राफोलॉजिकल एनालिसिस राइटिंग स्टाइल का भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ग्राफिक, द वे यू अरेंज अ पोएम, shape of the text. Okay, in the first poem, it is based on the theme of Christmas, on the event of Christmas. It is about a Christmas tree. So the poem is given the physical shape of a Christmas tree. उस तरह से arrange किया गया है. It is given this shape. फिर ये जो poem हमने, this is called graphological deviation. ठीक है, कि अगर आपके पास है, यू आर राइटिंग ऑन लोनलीनेस, तो भाई 2-3 लाइन्स लिखें, दैट विल whatever other devices you want to use. लेकिन इस शायर ने क्या किया है कि I in the first sentence, this could be, could substituted, और दोनों का मतलब, का मतलब भी a alphabet, ये भी for one, and I means I'm alone, I only one person, and then leaf as a leaf is falling down, जैसे पत्ता गिर रहा है. लेकिन देख लें कि 3-4 लाइन्स ऐसी है कि जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट यूज हुआ है. एंड देन वनलीनेस, ये शो कर रहा है कि लीफ इज फॉलिंग अलोन, द जर्नी ऑफ लाइफ इज लोनली, यू स्टैंड अलोन एज आई, और देयर इज अ लीफ falls down, and it gives the image of a person going through the journey of life alone, rising alone, beginning alone, falling alone, rising, standing alone, and falling alone. ये आपकी मर्जी है कि अगर you want this to give, but this is important. Sometimes the graphology, the very shape of the text is important. ठीक है, you are getting this? अच्छा, इसमें wait a minute, I forgot this. Actually, there are so many things to explain. और मुझे टाइम का बड़ा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी है. पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I was giving the example of a poem by a war poet. Alfred Owen is his name. And there is a poem, Futility. It's a beautiful poem if you come to read it. Usme, he says in the beginning, move him into the sun. Its touch gently awoke him once, or something like that. So मैं बहुत ज़्यादा dashes use करता है. ठीक है, dash is a long line. कहीं पे पोइट्स जो हैं एलिप्सिस यूज़ करते हैं, 3 dots, some information is missing, omitted intentionally. फिर कहीं पे कुछ राइटर्स they use a lot of commas, rough and playful and this and that, and so many commas, taking short breaks. So you have to associate them with the ideas and the way they are presented. फिर कुछ सेमी कॉलन का और कॉलन का बहुत यूज़ करते हैं. they use period a lot, full stops a lot. So wherever these punctuation marks, which are visual symbols on the page, you have to take them into account. कहीं पे आप जुमला लिखते हैं
कि I am a student of class or section B. अब पूरा तो I से कैपिटल लेटर है, भी अंडरस्टैंड कि वी हैव टू राइट फर्स्ट लेटर एज कैपिटल, लेकिन आप बाकी तो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ, और क्लास को पूरा कैपिटल कर देते हैं. और राइटर्स अपनी पोइट्री में, अपनी नॉवेल्स में ऐसा करते हैं, दे कैपिटलाइज सर्टेन टर्म्स. नाउ दिस इज ग्राफोलॉजी, दे आर प्लेइंग विद द शेप ऑफ द वर्ड्स and these have to be taken into account. Okay, for what purpose are they doing? How are they interwoven into the idea, into the context, into the content of the poem? ये सारी चीज़ें बहुत important हैं. You cannot miss anything out. If anything is missed, that is missed intentionally. अब मैं आती हूँ लेक्सिकल एनालिसिस की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल ऑफ इट, आई जस्ट गिव यू फ्यू आइडियाज़ कि लेक्सिकल चॉइस क्या होती हैं. लेक्सिकल चॉइस होती हैं आपके अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का इंतखाब. ठीक है, आपकी डिक्शन, योर वर्ड चॉइस, योर वोकैबुलरी. पहली बात तो ये है कि जिस तरह का ख्याल, तसव्वुर, तस्वीर, whatever you call it, आप present करना चाहते हैं, it should be in harmony with that. But it is done on various levels. Number one is that whether you go for monosyllabic words or you go for polysyllabic words. And I have explained that polysyllabic words are comparatively long and complex and with a lot of connotations. Monosyllabic words are comparatively short, abrupt, swift. आपके narrative को swift कर देता है, एक तेज रिदम दे देता है when you use monosyllabic words. फिर आपके पास एक और क्राइटेरिया है, and what is that? वो ये है कि there could be, you can go for pun, P-U-N. It is not F-U-N. You can choose words if you want to be playful, if you want to take the reader in at least two directions. जैसे पन का मतलब है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट वर्ड्स विद डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई से माय सोल इज वॉर्न आउट, ठीक है, मेरी एड़ी जो है वो खस्ता हो चुकी है. माय सोल, SOUL, आप कह सकते हैं कि माय सोल इज वॉर्न आउट, इट इज एग्जॉस्टेड, मेरी रूह जो है वो थक चुकी है. एंड दिस पन ऑन सोल एंड सोल, ठीक है, तो वो बड़ा प्लेफुल रहता है. पीपल एंजॉय इट एंड दे स्टार्ट थिंकिंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस. वन इज अ फिजिकल थिंग, वन इज अ स्पिरिचुअल थिंग. So it is very interesting, it is very aesthetically pleasing, as well as very smart, very intelligent, making the reader think, taking the reader in different directions. So similar sounding जो homonyms, I think they are called homonyms, जो similar sounding words होते हैं. फिर आप ऐसे words choose करते हैं, जब आप डिक्शनरी खोलते हैं तो some words have only two contextual meanings or one contextual meanings, and one contextual meaning becomes the norm. फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं which can be used in 4 to 5 contexts and they have a lot of connotations and a lot of contextual meanings. So अगर आप you go for the multiple word with multiple contextual meanings or semantic, with a huge semantic field, so your writing becomes complex because the reader will start thinking in all those directions. और अगर वो नहीं भी सोचता एक तरीके से भी, फिर भी these things will, the multiple meanings will keep coming. The words with denotative meanings, comparatively denotative meanings, or less connotations than words with multifarious and multiple connotations. Then formal and informal. Okay. बहुत ज़्यादा फॉर्मल, बुकिश, स्कॉलरली, पेडेंटिक, एकेडमिक लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे ना, उसी तरह का स्टाइल हो जाएगा. सिंपल एवरीडे वर्ड्स, कॉमन सेंसिकल वर्ड्स, वर्ड्स विच आर नोन बाय एवरीवन. एंड आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ Paulo Coelho, the Brazilian novelist who has written The Alchemist, The Archer, and By the River Piedra. वो कहता है कि I know, like in my vocabulary there are 3,000 or slightly above 3,000 English language words, and which I have used in all of my books. और आप देख लें कि his books became best sellers.
अब कोई साइंस पढ़ता हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा हो, कोई डॉक्टर हो, वो भी उसकी किताब लेके पढ़ सकता है, कैन गेट द आइडिया, द फिलोसफी एंड द आइडिया। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्कॉलरली लैंग्वेज, जैसे मैं, देर आर words, like one of my class fellows, whenever he used to speak, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई किताब से कोई बात कर रहा है. The sedimentation of this there was another difficult word, आप semantic use कर लें, vis-a-vis something. So I would feel like what's the difference in reading a book and what's the difference in listening to him. So very, very scholarly and very academic language. So that kind of a lexical choice gives a certain flavor to a certain style too. कि आप informal words choose करते हैं comparatively, you go for bigger ideas with simple words, or you go for petty ideas with complex words, or you want to go for complex ideas with complex words. The stylistic choice is yours. कुछ tabooed words भी होते हैं which are banned in society. Okay? And if you use them, your style is writing style, your speech style could be outrageous. It could be socially disturbing. ठीक है, जैसे हम जब when we go to the washroom, like this is a bad example, but I'll go with it. So some people say कि nature, I had nature's call, or nature is calling me, or I want to ease myself. ये इस तरह euphemistic expressions हम for certain things use करते हैं. We cannot be direct, we cannot be blunt, particularly in certain contexts. So it also depends on कि आप उस माशरे में. And then the further classification is that कि हम generic terms use करते हैं, words with generic ideas conveying general ideas, or words with specific, particular, targeted ideas. And the example, I'll go with this example which is given here. When you say Corolla, and when you say Swift, and when you say Suzuki, I don't know other brands of cars, तो आपके एक खास शक्ल की गाड़ी आपके जहन में आ जाती है. लेकिन जब आप कहते हैं a car, a means of transportation, a vehicle, तो ये generic terms, a general idea of a means of transportation, and specific. So the ones which convey specific ideas, they are called superordinates. आप use करते हैं तो very targeted image will be brought. अगर आप generic terms use करते हैं कि जी खाना तैयार है, तो it could be anything. लेकिन if you say कि बिरयानी is ready, तो a specific image comes to. खाना तो कुछ भी, वो साग भी हो सकता है, वो चावल भी हो सकते हैं, वो दाल भी हो सकती हैं. तो generic terms and this. And now I'm exhausted. Take care of the office.